Hello class 5th students, how are you all? Today we are going to discuss chapter States of Matter. Let's warm up. Write one word for the following. You have looked at the first, any substance that has mass and occupies a space, that is matter. So that's how you have to complete it. Let's know about states of matter, solids, gases, solution and solubility, particle arrangement in matter, liquids, change of state of matter. These are the topics we will discuss in this chapter. First we have states of matter. Matter is all around us. It is defined as anything that has mass and occupies a space. We know that matter exists in three states: solid, liquid and gas. Everything surrounding us is made up of matter. The air that we breathe and the books that we read is matter. A rock, a table and a book are solids. Water, petrol and milk are liquids. Oxygen, carbon dioxide and nitrogen are examples of gases. Particle arrangement in matter. Matter is made of very tiny particles which arrange themselves in different patterns, resulting in three different states of matter. The smallest particle of matter are known as molecules and atoms. The three states of matter, namely solid, liquids and gases, can be distinguished from each other on the basis of the arrangement of their molecules, and the space between these molecules is called intermolecular space. So स्टूडेंट, जो आपके मैटर जो है वो क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कोई मास होता है, ठीक है। और आपका मैटर कितनी फॉर्म में आपको मिलता है? थ्री फॉर्म्स में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब जो आपके पार्टिकल जो होते हैं उनका अरेंजमेंट आपका डिफाइन करता है कि आपका जो है मैटर वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस। और जो आपके पार्टिकल्स जो होते हैं, या आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो आपके मैटर की होती है, उसको आप मॉलिक्यूल्स और एटम्स बोलते हैं। Solids. In solids, the particles are tightly packed. There is very little or no intermolecular space. As a result, the particle of solid cannot move around. Thus, they have definite shape. Look at this picture. This is the particle arrangement of solids. So, student, आपका जो solid है उसके particle बहुत tightly packed होते हैं, कोई भी intermolecular space नहीं होता, इसीलिए solids की जो shape है वो definite होती है. Properties of solids. The particles in solids are tightly packed. Solids have definite shape. Solids have definite volume. Due to strong attraction between molecules, solids do not flow. So, students, solids के जो particles होते हैं वो tightly packed होते हैं. Solid की definite shape होती है, definite volume होता है और उनके molecules में बहुत strong attraction होता है. That's why solid flow नहीं करते. Here is liquids. The molecules in liquids are less tightly packed than solids. There is some intermolecular space between them. That is why the particle in liquid can move around. Thus, liquid do not have a fixed shape. They take the shape of the container into which they are poured. Liquids, like solids, have definite volume. Look at this picture. This is the पार्टिकल अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड। बच्चे, जो लिक्विड जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कुछ आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है प्रेजेंट होता है। हमारा जो लिक्विड होता है उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. द particles in liquid are less tightly packed than solids, therefore they can flow. Liquids do not have definite shape. They take the shape of the container into which they are poured. Liquids have definite volume. Liquid flow from high level to low level. So students, particle of liquid less tightly pack होते हैं, इसलिए आपके liquid जो है flow करते हैं. Liquid की shape definite नहीं होती, लेकिन volume definite होता है और आपका liquid हमेशा high level से low level की तरफ flow करता है. Gases. The molecules in gases are very loosely packed and have large intermolecular spaces between them. Therefore, they can freely move around. These gases neither have definite volume nor do they have definite shape. They are very quickly occupy the space where they are placed.
लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पार्टिकल अरेंजमेंट ऑफ गैसेस। जो आपकी गैसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उनमें होता है, वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए आपकी गैसेस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप। वो बहुत क्विकली आपके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। Properties of gases. Particles of gases are very loosely packed, therefore they fill the entire space where they are placed. Gases neither have fixed volume nor do they have a fixed shape. Gases can flow in all directions. Activity to demonstrate solid, liquid and gas. Aim to demonstrate solid, liquid and gas. Compare and contrast. Solid. Fill a paper cup with water. Mark the level of water. Place it in the freezer overnight. Tear paper off the ice. Let the children note the change in state as the water changes into ice. Liquid. As the ice melts above, explain to student that it is still water in different form. It went from liquid in a cup to hard shape. Taking the shape of the cup after all the ice melts, pour the water into the cup. Explain to the students the difference in the water volume due to evaporation. Guess. To blow a balloon without using your mouth. Place 3/4 cup of white vinegar into an empty plastic bottle. Put 2 tablespoons of baking soda into a balloon. Stretch the balloon over the mouth of the bottle. Keeping the balloon to the side of the bottle, put the balloon up straight over the bottle. Allowing the baking soda to enter into the vinegar, step back and watch as the balloon inflates with carbon dioxide. You can perform this activity in the guidance of your teacher. So student, हमें करना क्या है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे आप सॉलिड कैसे कर सकते हैं, आप एक कप लें, उसको वाटर से फिल करें, उसको फ्रीज करें, तो आपका जो वाटर है वो आपके आइस में चेंज हो जाएगा। फिर जब आपका आइस मेल्ट होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म होगा। या फिर आप जब कभी ट्राई करें बलून को अपने जो है आप मुंह से जब हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, बट अब आपको किससे फुल करना है, वो आपको एक बोतल लेनी है, उसमें आपको विनेगर डालना है। विनेगर में 2 टेबलस्पून आपने जो है सोडा, बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है। उसके बाद उस बोतल को आप बलून से कवर कर देंगे और उसके जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका बलून है वो कार्बन डाइऑक्साइड से फिल हो जाएगा, बिकॉज जब विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. We have learned that all matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. Matter can change its state from one to other if heated or cooled. For example, ice, solid, can change its state to water, liquid. When heated, water, liquid can change its state to vapor, gas on heating further. Vapor gas can change its state to water on cooling. Water, liquid, can change its state to ice, solid on cooling further. Let us understand the process involved in these changes. So student, क्या होता है, देखो आप सबको पता है मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो आप एग्जाम्पल हम वाटर की अगर बात करें, जब आप वाटर को क्या करते हैं, जब आप वाटर को कूल करते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाता है। जब आप उसे हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जब आप उस लिक्विड को फर्दर हीटिंग जो है प्रोवाइड करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप गैस को कूल डाउन होने देते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये आपकी एक चेन है। अब हम इस प्रोसेस को रीड करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर हियर. लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय फ्रीजिंग. सॉलिड चेंज इनटू गैस बाय सब्लिमेशन. गैस चेंज इनटू लिक्विड बाय कंडेंसेशन. लिक्विड चेंज इनटू गैस बाय इवेपोरेशन. Gas change into solid by deposition and solid change into liquid by melting. So these are the process by which state of matters change. Melting. When a solid turns into a liquid, it is called melting. The temperature at which this happens is called the melting point. With rise in temperature, the energy of molecules increases. As a result, they start moving faster, thus moving apart. The melting point of ice is 0 degree Celsius. So student, क्या होता है जब आपका जो कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है बच्चे लिक्विड में,
आपके जो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे इंक्रीज होता है और जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होते हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है और जिससे आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके, फन फैक्ट्स अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। When rocks get really hot, they turn into a liquid called a magma or lava. Gas can be turned into liquid through pressure. By squeezing all the gas molecules tightly together, a gas can become liquid. We use natural gas in our homes in its gaseous state, but when it's shipped in ocean tankers, it's shipped in a liquid state to save the space. Mercury has interesting properties of being both a metal and a liquid in its standard state. So बच्चे ये कुछ फन फैक्ट्स हैं कि जैसे कि आपका जो रॉक है वो अपनी लिक्विड फॉर्म में मैग्मा और लावा में जो है एग्जिस्ट करता है। आपकी जो गैस है वो आप उसे प्रेशर के थ्रू लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। जो आपकी नेचुरल गैस आप घरों में यूज करते हैं वो गैसियस स्टेट में होती है, लेकिन जब हम उसको किसी शिप में जो है लेकर जाते हैं तो हम उसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर लेते हैं। So these are some fun facts about our metal state. Here is evaporation. Evaporation is the process by which a liquid changes into a gas. The temperature at which a liquid changes into gas is called its boiling point. On heating, the water becomes gaseous through evaporation. Drying of clothes and also of the sweat on our skin are examples of evaporation. So बच्चे इवेपोरेशन से क्या होता है, आपका लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, हियर इज वाटर इज बॉइलिंग हियर, सो वाटर चेंज इनटू गैसियस फॉर्म। ओके, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड आपका किस में चेंज होता है, गैस में, दैट इज आवर बॉइलिंग पॉइंट। और आपका जो है कपड़ों का सूखना, जो स्वेटिंग होती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन। हियर इज कंडेंसेशन. Condensation is the process by which a gaseous substance change into its liquid state by giving out heat. Having a cold drink on a hot day, the can sweats. Water vapor in air hits the colder surface of the can and turns into liquid water. So बच्चे कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है, जब आपकी गैसियस स्टेट से कोई सब्सटेंस किस में चेंज होता है, लिक्विड में। जैसे सपोज आपकी कोई कोल्ड ड्रिंक की कैन है और बहुत गर्मी वाले दिन में आप उसको जैसे रखते हैं, थोड़ी देर बाद आप चेक करते हैं उसके बाहर एक आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती है, आपकी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। वो वाटर वेपर आपकी कोल्डर सरफेस पे जो है वो हिट होती है और वहां वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। हियर इज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. The process by which a liquid changes into its solid form is called solidification. Water on freezing changes into ice. The temperature at which a liquid changes into a solid is called its freezing point. The freezing point of water is 0 degree Celsius or 32 degree Fahrenheit. So student, वो process या जिसमें आपका liquid जो है solid form में change हो जाता है, that is solidification. और जिस पॉइंट या जिस टेम्परेचर पे वो बच्चा लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, दैट इज आवर फ्रीजिंग पॉइंट. डू यू नो ड्राई आइस? It is actually solid carbon dioxide at a temperature of -79 degrees centigrade. Dry ice is particularly useful for freezing and keeping things frozen because of its very cold temperature, -109.3 degrees Fahrenheit or -78.5 degrees Celsius. Dry ice is widely used because it is simple to freeze and easy to handle using insulated gloves. Dry ice changes directly from solid to a gas sublimation in normal atmospheric conditions without going through a well liquid stage. Therefore, it gets the name dry ice. The process by which a solid changes into gas directly is called sublimation. तो बच्चे ड्राई आइस क्या होती है, आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम उसको ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज होती है, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होती है। एंड हमें बहुत सारे यूजेस आपके ड्राई आइस के हम करते हैं, जैसे कि आपकी कुछ भी चीज है उसकी स्टोरेज के लिए, फ्रीजिंग के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, ड्राई आइस का यूज करते हैं. Here we have check and mate. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Solution and solubility. A solution is a mixture of molecules that are evenly distributed. A simple solution consists of a solute and a solvent.
In a solution, the substance that dissolves is called the solute and the substance in which a solute dissolves is called the solvent. Student, solution जो है आपका मिक्सचर होता है solute और solvent का. solute वो substance होता है जिसको हम dissolve करते हैं और solvent वो substance होता है जिसमें हम dissolve करते हैं. Okay students, for example, when salt dissolves in water, it forms salt water solution. Here, salt is solute, salt is the solute, water is the solvent and salty water is the solution. So student, जैसे अगर आप salt को किस में dissolve करते हैं water में, तो salt आपका solute होगा और water आपका solvent होगा. Okay, और जो आपका solution होगा that is salty water. Most substance dissolve in water and hence it is called the universal solvent. तो बच्चे आपके मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. लुक हियर एट दिस पिक्चर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज वाटर एंड वी गेट अ सॉल्यूशन. Soluble and insoluble substances. Substances that dissolve completely in a solvent to make a solution are called soluble substances. For example, sugar is dissolved in water to make a sugar solution. Substances that do not dissolve in a solvent are called insoluble substances. For example, chalk powder does not dissolve in water. So students, वो substance जो आपके dissolve हो जाते हैं that is soluble substances, जो dissolve नहीं होते हैं that is insoluble substances. Types of solution. Based on the type and state of solute and solvent present in a solution, there may be different types of solution. Solid and liquid. In this type of solution, a solid solute dissolves in a liquid solvent to make a solution. Example, salt water solution. So बच्चे solid liquid solution क्या होता है, जिसमें आपका solute जो है आपका solid होता है and solvent is liquid. Liquid and liquid. In this type of solution, a liquid solute dissolves in a liquid solvent to make a solution. Example, orange juice and water. तो बच्चे इसमें आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं. गैस इन लिक्विड. इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस सोल्यूट dissolve in a liquid solvent to make a solution. Example, carbonated fizzy drinks. Here carbon dioxide dissolves in water. Oxygen dissolved in water is used by all aquatic animals for breathing. सो स्टूडेंट, ये आपका जो सॉल्यूशन होता है गैस एंड लिक्विड, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, जो कैन या आपकी बोतल जब आप ओपन करते हैं जो गैस रिलीज होती है वो सॉल्यूशन होता है किसका, गैस एंड लिक्विड का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. लुक हियर, गैस एंड गैस. In this type of solution, a gas solute dissolved in another gas solvent to make a solution. Example, a room freshener sprayed in a room. Air is the perfect example of a mixture of number of gases. So बच्चे, जब आपकी गैसेस मिक्स होती है दैट इज गैस इन गैस सॉल्यूशन, और लाइक आपकी एयर जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस का. हियर इज एन एक्टिविटी ए. Activity to demonstrate the solubility of substances. Here we demonstrate the solubility of substances. Materials required: 10 tumblers, water, a stirrer, strainer and substances like salt, chalk powder, wheat bran, milk and sand. Procedure: take 5 tumblers and pour water into each. Now add the substances provided into each tumbler separately. Stir each tumbler with the stirrer. Notice the change in each tumbler. Now strain the contents of all the 5 tumblers into 5 new tumblers with the help of a strainer. Observation: notice that chalk powder, wheat bran and sand are left behind in the strainer, whereas salt and milk easily passes through the strainer. Inference: substances like salt and milk dissolve completely in water and are called soluble substances, and substances like chalk powder, wheat bran and sand are left behind in the strainer and does not dissolve in water and are hence called insoluble substance. So student, आपने क्या करना है, आपने 10 टम्बलर्स लेने, उनमें से आपको 5 को जो है वाटर से फिल करना है. उसके बाद उनमें आपको अलग अलग सब्सटेंस जैसे आपकी गिवन आपको है सोल्ट, चॉक पाउडर, व्हीट ब्रान, मिल्क एंड सैंड को मिक्स करना है. जब आप इन सबको मिक्स कर देंगे स्टर की हेल्प से, जब फिर आपने क्या करना है, जो आपकी लेफ्ट आउट 5 टम्बलर्स हैं उनमें उनको क्या करना है, चेंज करना है. जब आप उसमें आप स्ट्रेनर की हेल्प से
आप इनको दूसरे टम्बलर में ट्रांसफर करेंगे तो आप चेक करेंगे जो आपका सेंड, व्हीट ब्रान और चॉक पाउडर है वो आपके फर्स्ट वाले टम्बलर में लेफ्ट आउट होगा. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सो जो आपके डिसॉल्व नहीं होंगे दैट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, और मिल्क और सोल्ट आपका डिसॉल्व हो जाएगा और वो आपके दूसरे टम्बलर में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे. तो दैट मीन्स दे आर सोल्यूबल. Miscible and immiscible liquids. When two liquids on mixing mix completely so that one cannot be separated from the other, they are called miscible liquids. For example, milk and water. When two liquids cannot be mixed with each other, they are called immiscible liquids. For example, oil and water. When two such liquids are mixed, the lighter liquid oil floats over the surface of the heavier liquid water. तो बच्चे जो आपके लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें आप नहीं इजीली सेपरेट कर सकते हो. दैट इज मिक्सेबल लिक्विड, जैसे मिल्क एंड वाटर. वो लिक्विड्स जो आपके मिक्स नहीं होते हैं और जो आपका लाइटर लिक्विड जो है वो हैवियर लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करता है, दैट इज इमिसिबल लिक्विड्स. लुक हियर, लुक एट द पिक्चर्स. हियर इज मिसिबल लिक्विड्स, ऑरेंज जूस प्लस वाटर, एंड हियर इज इमिसिबल लिक्विड, ऑयल एंड वाटर. Separation of substances in liquids. Both substances, that means insoluble and soluble, can be separated from their solvents by using different methods. Separation of insoluble substances. Substances that are insoluble in water can be separated through various processes such as sedimentation, descentation and filtration. Here is सो बच्चे आप इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को बहुत सारे प्रोसेस है जिनसे आप क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन वी हैव सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन. These two processes are normally used in combination to separate insoluble solid substances from a mixture of solids and liquids. So बच्चे आपका सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वो आपके insoluble solid और liquid के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है. Look here. Sedimentation, the process by which insoluble solid particles settle down at the bottom of a solid liquid mixture is called sedimentation. For example, when muddy water containing soil and sand is left undisturbed, soil and sand being insoluble settle at the bottom. This process is called sedimentation and the solid substance settling down at the bottom are called sediments. So students, सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब आपका कोई भी ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड जो है मिक्स हो किसी लिक्विड के साथ, जैसे आप मडी वाटर को आप ले लें, आप उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो आपका सॉइल और सैंड है वो आपका सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में, और जो बॉटम में सेटल डाउन होगा इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं. और जो सॉलिड आपका बॉटम में सेटल डाउन होता है दैट इज सेडिमेंट्स. Decantation. This process takes place after sedimentation. The pouring of the upper layer which contain water is called decantation. तो बच्चे जब आपका सेटल डाउन जो है आपका सॉलिड हो जाता है, उसके बाद जब हम उसमें से जो लिक्विड जो है उसको पोर करते हैं किसी अनदर बीकर में या किसी अनदर बीकर में, सो दैट इज decantation. Look at the picture here. Sedimentation and decantation. Here is filtration. This method is used to separate fine insoluble solid particle from a mixture of solid and liquid. In this process, the mixture is allowed to pass through a filtering device. Solid particles are left as residue in the filtering device. The clear liquid passes through the filtering device and is called the filtrate. The clear liquid passes through the filtering device and is called the filtrate. तो स्टूडेंट क्या होता है फिल्ट्रेशन में, जो बहुत माइनर इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, मिक्सचर होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड के, उसको फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं. क्या करते हैं कि हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है, उसको हम अपने कॉन में सेट करते हैं, वहां से लिक्विड पास कराते हैं. जब आप उससे लिक्विड पास कराते हैं तो आपका जो इनसॉल्युबल सॉलिड के पार्टिकल्स है वो आपके फिल्टर पेपर पे एज अ रेजिड्यू रह जाते हैं, और जो आपका लिक्विड जो है वो प्योरली आपके किसी बीकर में या जिस भी कंटेनर में आप उसको लेते हैं वो वहां पे कलेक्ट हो जाता है. वो जो आपका लिक्विड होता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. हियर इज ग्लास फनल, फिल्टर पेपर, सॉलिड रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट. Separation of soluble substances. Soluble substances may be separated from their solution by process such as evaporation and condensation and also through distillation. Here is evaporation and condensation.
This process involves boiling of the solution containing soluble impurities. For example, salt or sugar can be separated from their solution by combination of evaporation and condensation. The solution is heated until the water evaporates and the remaining residue is salt or sugar. In this process, however, water is lost through evaporation which can be obtained back through condensation. So बच्चे आपके like salt और sugar का जो salt and water या sugar और water का जो solution होता है उसको हम separate कर सकते हैं by the combination of evaporation and condensation. आप solution को heat करोगे तो आपका water जो है वो evaporate हो जाएगा और residue आपका salt या sugar होगा और जो आपका water जो है evaporate हुआ है उसको आप condense करके आपको वाटर दोबारा मिल जाएगा. सो आपको वाटर, शुगर या सॉल्ट जो है मिल जाता है. सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. लुक एट द पिक्चर हियर. इवेपोरेशन, water vapor, evaporating disk. Here is salt and water and burner. This is the process of evaporation. Distillation. Distillation is a process of removing soluble impurities from its mixture with water. The process of distillation involves the following steps. First, the mixture of water and solute is heated in a round bottom flask to boiling temperature. The neck of the round bottom flask is connected to a condenser which cools the water vapor that had escaped from the round bottom flask. Third, the vapor on cooling changes into water droplet and is collected in a flask attached to a condenser. Pure water thus collected by the process of distillation is called distilled water. It is the purest form of water as it is free from all kinds of impurities. However, it is not suitable for drinking as it does not even have the dissolved minerals that should be present in drinking water. This water can be used in car and inverter batteries for medical purpose in laboratories, etc. तो स्टूडेंट्स डिस्टिलेशन में क्या होता है, लुक एट दिस पिक्चर. जो आपका सॉल्यूशन है हम उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या करते हैं, रखते हैं. उसके बाद उस पर हम एक कंडेंसर फिट करते हैं और उसे एक फनल से क्या करते हैं, अटैच करते हैं और फनल को हम एक और फ्लास्क से अटैच करते हैं. हम अपने जो सॉल्यूशन है उसको हीट करते हैं. उसके बाद जो उसमें वाटर जो प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, इवेपोरेट हो जाता है. और जो कंडेंसर है उस इवेपोरेटेड वाटर को कूल डाउन करके कंडेंस करता है और वो कंडेंस्ड वाटर किस में चला जाता है बच्चे, आपका दूसरा जो फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है इस तरह वो इस फ्लास्क में ट्रांसफर हो जाता है. जो आपका वाटर फ्लास्क में ट्रांसफर हुआ है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर. उसमें कोई भी मिनरल कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है. इस टाइप के वाटर को हम अपनी कार या इन्वर्टर बैटरीज में यूज करते हैं. हियर वी हैव चेक एंड मेड. You can do it as we already read about these things. What we learn in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Matter exists in three states: solid, liquid and gas. The three states of matter have different intermolecular spaces. Solid have definite shape and volume. Liquid have no definite shape but have definite volume. Gas have neither a definite shape nor a definite volume. Matter can be changed from one form to another. The process by which solid changes into liquid on heating is called melting. The process by which a liquid changes into gas is called evaporation. The process by which gas changes into liquid is called condensation. The process by which a liquid changes into solid is called freezing. A solution is a mixture of molecules that are evenly distributed. Liquids can be miscible, orange juice and water, or immiscible, oil and water. Substances insoluble in water may be separated by sedimentation, decantation, and filtration. Substances soluble in water are separated by evaporation and condensation and distillation. Here is some keywords. Contraction, decrease in the size of substance on cooling. Evaporation, the change from liquid to gas. Miscible, when two liquids mix completely so that one cannot be separated from the other. Immiscible, when two liquids cannot be mixed with each other. Sedimentation, the process by which insoluble solid particles settle down at the bottom of a solid liquid mixture. Decantation,
Filtration. This method is used to separate fine insoluble solid particles from a mixture of solid and liquid. Distillation. A process of removing soluble impurities from its mixture with water. Thank you, students. We will meet again in the next chapter.